Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thank you very much for joining me today's session. Uh, First of all, before I start, my name is Hameed sir, and on behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. Before starting up today's lecture on graphic design, because the one which we have done up till yesterday, that has been done. Okay, and now we are proceeding to we are actually leveling our standard high. Okay, so inshallah from tomorrow or day after tomorrow, means Monday onward, we will be exploring the higher ends of graphic design, means higher end softwares of the graphic design. कुछ आपको थोड़ा सा उसके मुतालिक I'll explain them. I'll explain every bit. लेकिन apart from this, there's very interesting aspect also of doing this whole exercises कि आपको साथ साथ वो तमाम की तमाम categories को भी define कर दिया जाए. That would be great if you could. वालेकुम अस्सलाम. सो दैट कि आप अपने ग्राफिक डिज़ाइन को उसके हिसाब से कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर सकें, या अपनी इंटरेस्ट या अपनी कैटेगरी जो जो आप चूज़ करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, आज आपके सामने बिल्कुल एक वाइड एरिया ओपन करूंगा सो दैट कि आप उनमें से अपनी ग्राफिक डिज़ाइन की फर्दर कैटेगरीज को चूज़ कर सकें. So before I start, I would like to introduce Minahil Tahir. If you are there, Minahil Tahir is in class today. I'm extremely very grateful, and honestly, she's not available today in the class. But the comment she passed on our YouTube lecture of yesterday, I'm very grateful कि इतना अच्छा comment आपने दिया, and I honestly appreciate कि आप लोग साथ साथ गो थ्रू कर रहे हैं वीडियोस, नॉट ओनली यूर लाइकिंग, एट द सेम टाइम यू आर एक्चुअली उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स भी दे रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट. एंड चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई थिंक वी आर नॉट येट, देयर आर सो मैनी पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल ट्राइंग टू गेट इन द क्लास, लेकिन चलें, लेट्स गेट स्टार्ट आवर रेगुलर सेशन. जो आ गया वो आ गया, जो नहीं आ गया ही हैज़ टू वेट नाउ. राइट जी. सो to start up with, as I introduce myself, my name is Hameed Nakvi, and I'm freelance entrepreneur and technology consultant. You can join me on WhatsApp, on Twitter, with the handle Hameed Asghar. With you can search me on YouTube, as well as you can go through my website. Okay, today we are going to discuss the graphic design categories, because sooner or later, either today, maybe tomorrow, maybe after 1 week, maybe after the completion of this course, and maybe even after that, if you are interested to join this freelancing graphic design as a main category, and if you're trying to become a freelancer or you're trying to move for any job, वो कौन कौन सी categories हैं जो जो fall करती हैं under this graphic design category, that is something very important for you to know, at least as a graphic designer. So let's get started. So the first category, either you can choose any one segment of graphic design out of it, and you can choose multiple. It is all depends के आपका experience, आपका exposure किस level तक है, and what are those things which you can do, or the levels which you can achieve. And by the way, if you ask me, I have experienced almost more than 50% जो कि मैं आज सारा आपको बताने जा रहा हूँ. लेकिन at the same time, once you are good in Photoshop and the Illustrator, regardless whatever the category we speak, regardless whatever the category we talk, you know the basic elements, and that is the whole purpose of this course कि वो तमाम basic elements of Photoshop and Illustrator ये सारे के सारे आपको बता दिए जाएं. So whenever it comes to the project like logo design, you should have been knowing what are those basic softwares and from where we can get started this logo design. Yesterday, that is the main reason I shared previous class lecture. I'm not at all interested कि मैं वही class दोबारा repeat करूँ, इसलिए the things which has passed means past, वो आप YouTube के channel पे जाके you can go through all those lectures which are totally free, available to all of you. Correct? How to become a logo designer, that is something entirely up to you.
from tomorrow, or maybe from Monday onward, the classes which we are going to start, the first lecture would be of how to create logos, and we will create sort of dummy logos for anyone. या इसी क्लास में से मैं एक या दो की there are 6, 7, 8 or maybe to some more categories of logo design. तो मैं उनमें से एक एक करके जल्दी जल्दी randomly आप में से, let's suppose I pick up one name, let's suppose AK Aswan Khan, maybe AT, that is Anika Tahir, maybe AB, that is Abdullah AB, and something like even Maryam Naqvi, she is there. So we can come up any sort of logo for them, so that they should have an idea how to start and how to create all those sort of things. Correct? So I just not want to mention any specific name. Let's suppose Zareen Taj is at the bottom, and Mr. Jamot is there, and there are plenty of others like Rubab, Rida, and Kuratulan. You can choose your category of logo, and you can just take this as an experiment for 2 or 3 days to come up with your logos. Whatever the types which I have already shared, उस वीडियो से जाके you can choose your logo design category. उस category में से you can come up with your sort of logos. That may be abstract, that may be figuratives, that may be emblem, that may be simplest text-based logos, and there could be some figures or anything like that. Again, there's no compulsion at all. There's no hard and fast fixed rule for creating these kind of logos. That is all your creativity. So the next field in this case after the logo design is the brand style guides. That is something which I will be explaining, uh, but of course, combining all together this one subject, brand style guides, is being graphic designer. This is something you must have either noted down or the recording has been on. You can go through these recordings. There, वहाँ से जाके you can start creating your notes, because once you reach into the practical field as professional graphic designer, that you know Photoshop, you know Illustrator, you know multiple things. Now the client will ask you to come up with the brand style guides. For that purpose, it's a huge subject, which is a complete chapter which is going to start in front of you. So you must have to have all those basic knowledge. It's a full-fledged complete page which is going to be filled very soon. So मैं इसलिए बार बार आपसे ये mention करता जा रहा हूँ. So either you note it down or maybe go through these videos, and एक एक category को, there could be one way that I can create different sort of videos which inshallah as of logo design जिस तरह मैंने create की, same one lecture could be for brand style guide. लेकिन of course total categories are more than 100 by the way. Into this graphic and design की main category के अंदर more than 100 different fields which actually comes, और ये 100 different type के courses बन जाते हैं. So I'm not intent कि मैं आपको बिल्कुल नई direction पे ले जाऊँ, but being as a basic knowledge, being graphic designer, ये सारा का सारा base knowledge आपके पास जरूर होना चाहिए. And why it is important, from as I told you earlier, from Monday onward जब हम Photoshop start करेंगे, then that time would not be the right कि हम ये चीजें discuss करें. At that time you should have that basic knowledge. So after that is game design. Game design में there is nothing. You got to believe me on this. There are plenty of students. They are doing some amazing work in the graphic design as they are showing in the WhatsApp group. I just do not want to name anyone. लेकिन honestly speaking, I'm amazed. I just don't know what their name is, but I'm just going through their work, especially the character B, who has done it. I mean, honestly, अगर आप ये काम कर सकती हैं तो मुझे somehow मुझे कुछ थोड़ा सा ना वो jealousy sort of feel होना शुरू हो जाती है कि आपने और इतना अच्छा काम कर दिया. You want to cross my level, या ये क्या, this is something, Ruby's Craft Corner, amazing, absolutely amazing. You know, इससे just आप एक step पीछे, just एक step, आपको थोड़ा सा वो हल्का सा आपको push मिलता गया, and you will stand in front of the whole world. This amazing work, if you can do by yourself, rest assured,
कि you can be a very successful graphic designer inshallah in future. ये जो कैरेक्टर्स आपने बनाए यही कैरेक्टर्स सारे के सारे गेम डिजाइन के लिए काम आते हैं. Okay, and by the way थोड़ी देर में by the end of this session I will be explaining you exactly कि game designers when they reach to the international market how much they earn and what are their portfolios. ठीक है ना, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. बट विदाउट मच एक्सप्लेनिंग आई जस्ट वांट कि मैं जल्दी से वो सारी की सारी कैटेगरीज आपके सामने रख दूं. Graphics for streamers. Streamers are like 6 feet, 5 feet, 6 feet के Panaflexes type. Those are in vertical shapes. ठीक है, उसके पीछे वो स्टैंड लग जाते हैं. Those are called standees. ठीक है ना. So graphics for streamers. Streamers means के फ्लैक्सिस टाइप जो कि इनडोर किसी न किसी फंक्शन, किसी न किसी इनॉग्रल सेरेमनी एंड कोई समथिंग लाइक दिस. एंड बाय द वे आई एम वर्किंग नाउअडेज फॉर एन इनॉग्रल सेरेमनी जहाँ पे मैंने स्ट्रीमर्स सारे बनाने हैं. एंड business cards and stationaries, that is something which you have to do by yourself as the reason. Sorry, मैंने गलत कर दिया. I have to uh, still there are students which are trying to load. ठीक है जी, business card and stationaries, that is quite obvious. Regardless you start for your own brand, regardless you start work for yourself, you must have to do it for anyone to know the basics at these points. That starts from your personal business cards and your stationery. Eventually, that the same parameters, same thing, you will be applying for the other contractors, किसी local company के लिए या किसी local business के लिए या किसी भी international business के लिए. Illustrations. By the way, when it comes to the illustrator, this is something which we will be doing. The same work, the same graphic design work which you are doing in PowerPoint right now, absolutely this is the same. You will have be working in Photoshop, and then from Photoshop to Illustrator. So Illustrator में भी हम यही characters बनाएंगे, लेकिन the difference would be there कि I'll be explaining how these characters would animate. At the end, how would they speak, right? So interestingly, that would be the ultimate stage जहाँ पे eventually inshallah by the time we reach to by the end of our course, at that time you will feel very comfortable कि yes, now I can create characters and those characters can speak for your game as well as for your mobile application as well as for your website, right? So these are illustrations जो कि इंशाल्लाह हम create करेंगे. उसके बाद the pattern design. By the way, इसी क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइन के हैं they will be doing very soon this pattern design. लेकिन this is the same thing which you can do in Photoshop as well, right? So this category is for basically clothes and female clothings और उन तमाम के लिए ये सारे के सारे this category actually we use. Brochure design. Nothing is to tell you in detail that what exactly this brochure means. One of the student even they have come up with this trifold था या double fold था. लेकिन you have shared a video and that's a very excellent job. The only problem was this that was perhaps in black and white color. You might take a print out and शायद आपने उसी की वीडियो रिकॉर्ड कर दी. But eventually what we will be doing is कि हम actually ये सारा graphic brochure बनाएंगे in Photoshop as well as in Illustrator, correct? अगर हम इनमें से कोई कैटेगरी which is quite obvious, इतनी लंबी लिस्ट है and not even the one has completed, अगर ये complete हम Photoshop में ना भी कर सके, जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं इन तमाम की एग्जांपल्स के साथ पूरी एक कंप्लीट एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट पोस्टर डिज़ाइन, हाउ टू स्टार्ट ब्रोशर डिज़ाइन, हाउ टू स्टार्ट पैटर्न डिज़ाइन, हाउ टू स्टार्ट इलस्ट्रेशन से एनिमेशंस एंड ये सारी की सारी आने वाले दिनों में that will be a part of the complete not exactly this course लेकिन I will be sharing all those lectures on YouTube. ठीक है. So stay in touch with Institute of Freelancing. जो वीडियोस उसके ऊपर अपलोड होती रहेंगी. The amount which the institution has been charging against this course, that is not only for this one course, correct? You can attempt the previous four sessions as well as rest assured for at least आने वाले इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी तो 10 से 15
या मे बी शायद नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आते जाएंगे उनमें हम ये सारी की सारी चीज़ें बना के आपसे शेयर करते रहेंगे. सो the you need to you need to only stay in touch with this institution. उसका बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल receive an intimation as soon as the recording or the new lecture that would has been up, regardless के आप इस सेशन में हैं, regardless के आप किसी भी previous सेशन से हैं, एंड अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन आगे चलता गया which is compulsory for them, so आप you will be all along with us inshallah. अच्छा जी, पोस्टर डिजाइन क्या करते हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस. साइन एज डिजाइन, इट्स अ ह्यूज कैटेगरी, ठीक है ना, इसके मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे. फ्लायर डिजाइन, फ्लायर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ वन पेजर सॉर्ट ऑफ थिंग, विच इज एक्चुअली लोग अमूमन यू विल फाइंड आउट ऑन इन दी, बच्चे इशारों पे खड़े होते हैं, दे आर जस्ट फ्लायर गाड़ी में थ्रो करते रहते हैं, थिंग्स लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड अ फ्लायर डिजाइन. उसके बाद बुक्स डिजाइन, बुक्स कैसे डिजाइन होती हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बुक डिजाइन. वन इज बाय द नहीं सॉरी थ्री कैटेगरीज ऑफ बुक डिजाइन. वन इज that is called in English we develop, and the software, there are multiple softwares which we use for this. And by the way, InDesign would be our coming inshallah, usme we will be explaining and we will be developing this kind of designs. And Urdu type of books design, that is also a very important segment. और उसके अलावा that is called EPUBs. EPUB means for mobiles and iPads के लिए जब हम create करते हैं digital books, तो that category would fall in this. Album cover design, very simple, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है, but basically the only problem is कि आप में से शायद more than 80 to 90% स्टूडेंट्स होंगे जो ये फर्स्ट टाइम ये सारी की सारी डिस्कशंस, ये सारे के सारे वर्ड सुन रहे होंगे. there's nothing as such, कोई इसमें कुछ जादू या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप देखते रहते होंगे, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव नेवर अटेम्प्टेड योरसेल्फ कि मैं ये कैसे खुद से क्रिएट कर सकता हूँ. सो दैट इज समथिंग अ पार्ट ऑफ दिस डिजाइन. पॉडकास्ट कवर आर्ट मीन्स सीडीज के ऊपर जब कवर आर्ट आता है, एंड सीडीज के अलावा जब आप यूट्यूब या किसी जगह पे अपनी पॉडकास्ट मींस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करते हैं, और जब उसको प्ले करते हैं तो उसके ऊपर एक काइंड ऑफ एक इमेज या स्क्वेरिश सॉर्ट ऑफ थिंग वो पॉप्स अप होती है. द सेम थिंग when you apply that USB or the CD disk inside your cars and CD players के अंदर या घर में किसी जगह पे भी लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पॉडकास्ट कवर आर्ट आपके सामने आ जाता है. That simply goes to the next category is the packaging design. I'm trying my level best. इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर मैं एक expert with industry experts having more than, if I'm not wrong, 24 years or 23 years experience जिनका है. I have already spoken to him. He promised me कि इंशाल्लाह जब कहेंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा, and हम उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे. He is mashallah running his own complete full-fledged business, a full-fledged printing house as well as the design house. तो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे. एंड बाय द वे, पैकेज डिज़ाइन के मुतालिक उनकी कंप्लीट एक वेबसाइट है जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, और वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे. उसके अलावा स्टोरी बोर्ड्स इज नथिंग एल्स एज यू हैव सीन इन दी पावर पॉइंट. जिस तरीके से आप ये इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं ना, कैरेक्टर्स बना रहे हैं, एब्सोल्युटली यही तरीका है स्टोरी बोर्ड्स बनाने का. बस इसके साथ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज द small bit of explanation, the elements of graphic design. You remember the first lecture we spoke, and the details which I told you कि जब भी कभी आप कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज ड्रॉ करेंगे, डिजाइन करेंगे, जब तक उसके साथ उसके बेसिक एलिमेंट्स अटैच नहीं होंगे, दैट मीन्स उसका टेक्स्ट that should be explaining that what exactly you are trying to portray in this. And that is something, a storyboard that goes to the designers, that goes to the animators, and that goes to the character animators जो उसके बेस पे आपके स्टोरी बोर्ड को सामने रखते हुए पूरी की पूरी स्टोरी को एनिमेट कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन एनिमेटर्स इज entirely all together a different category. So as our subject is not the animations, so ग्राफिक डिजाइनर इज द वन जो एनिमेटर को इनपुट देता है. मींस आप स्टोरी बोर्ड बना के, चाहे वो पावर पॉइंट के ऊपर, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर,
बना के जब आप उसको देंगे तो ही विल बी एबल टू स्टार्ट हिज वर्क एनिमेशंस, करेक्ट? सो इसके लिए, by the way, let me tell you that there is a expert who will be joining us from all the way from Montreal, Canada से हमें join करेंगे. I am not sure either Montreal या किधर हैं. His name is Bakar Amjad, and he is my very old fellow and friend. And he is, by the way, doing freelancing in Canada. And I'll try my level best, inshallah, किसी time पे during these coming days, coming weeks में, inshallah, he will be with us and he will be sharing his experience, not only the Canadian market का experience graphic design का, at the same time जो जो कुछ उन्होंने खुद से achieve किया. So इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा. Let's move to the next topic. Web and mobile design. मैं it's a huge altogether a complete topic. Web and mobile design. आप इस एक कैटेगरी को पकड़ लें, दी होल लाइफ अर्निंग फ्रॉम दिस वन कैटेगरी से आपकी लाइफ टाइम अर्निंग हो सकती है. So this one category is so big. So the idea is just to translate the knowledge which I have. ये सारे का सारा ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरीज में आता है. सो आपने इनमें से अपने फ्यूचर में किसी न किसी एक को चूज करना है. And you will become my assistant, and inshallah, with your input and with my input, we will come up all together a complete comprehensive one lecture for all of those Pakistani or anywhere, not necessarily Pakistani, but anyone from anywhere in the world, जो भी करना चाहता है, if he wants to start his career as web and mobile design, what are those basic parameters? Inshallah, that is something which I'll be explaining as a altogether a different subject. Social media design. Nothing is to tell you. आजकल दौर ही सोशल मीडिया का. दैट इंक्लूड्स फेसबुक, दैट इंक्लूड्स यूट्यूब, दैट इंक्लूड्स व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, all those different type of I'm not talking about kind of TikTok things. No, that is not actually है तो social media में fall करता है, but we are not talking about that category because we are talking about professional categories. ठीक है, professional categories के लिए आप जब different काम करेंगे तो this one segment would be good enough. And by the way, again, let me tell you, this one domain, inshallah, in coming month, most probably I'm planning for complete digital marketing के course में लेके आऊँगा. That includes social media design also. And other than that is augmented reality filters and lenses. uh, mm, इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है. जस्ट गो टू दिस गूगल एंड जस्ट लिखो वहाँ पे AR फिल्टर्स एंड लेंसेज, एंड यू विल फाइंड आउट अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड. बिल्कुल एक ऑल टुगेदर आपके सामने नई फील्ड ओपन हो जाएगी. पोस्ट कार्ड डिजाइन. हर इवेंट के लिए यू मस्ट हैव टू हैव अ पोस्ट कार्ड, चाहे वो ईद हो, चाहे मुहर्रम आज से शुरू हो गया है, चाहे वो मुहर्रम से रिलेटेड आप पोस्ट कार्ड्स बनाएं, चाहे आप इससे पहले जिस तरह लाइक मंथ ऑफ या ईद उल अज़हा है या ईद उल फितर है या न्यू ईयर है, या कोई भी आप कैटेगरी चूज़ कर लें, किसी भी कैटेगरी के लिए सारी दुनिया से everyone has to have one there's a segment, there is some events that is going on in their countries, so they want this kind of the designers. They should know the basics things first. So the postcard design की basics क्या होते हैं, that is something we can discuss. Catalog design, I'm not going to. Menus design, not at all. I'm explaining you much. Invitation designs, this a small category. Portraits and caricatures, huge. Cartoons and comics, one big subject. Tattoos design, अगेन मतलब मैं इसके ऊपर क्या अब एक्सप्लेन करूँ. टैटूज डिज़ाइन, चाहे आपकी क्लॉथिंग्स के ऊपर आए, चाहे आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, चाहे आपके किसी भी चीज़ के ऊपर, यू कैन प्लेस दैट कैटेगरी. वेब के बैनर्स, दैट इज़ एंटायरली ऑल टुगेदर. इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं. फोटोशॉप एडिटिंग, that is something we will be inshallah discussing in the Photoshop topic. उसके अलावा architecture and interior design, this category also falls under the graphic design. अब आप just, is there anyone in the class if he knows architecture and the interior design, think of it, such a huge category this one is, right? So let's move to the next. Landscape design, घरों के बाहर जो lawns होते हैं, lawn के अंदर जो different type of designs and pebbles and trees and छोटे इस तरह के जो आप चीज़ें बनाते हैं, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी, जिसको कहते हैं हम लैंडस्केप डिज़ाइनर्स. लैंडस्केप डिज़ाइनर्स आर एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ वर्क जो घर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम होता है.
हाथ खान, मैं क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, आप जस्ट इसको थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन आंसर्स, एंड उस टाइम में हाथ खान रिमाइंड मी आफ्टर दिस 10 to 15 मिनट्स, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक? ओके जी। Information building, information modeling, if you know, there is a category of Google. I was as I was explaining, there are different Google applications, जिनमें से एक Google application है that is called Google Earth. Anyone knows Google Earth? गूगल अर्थ के ऊपर, डू यू नो दैट के सारी दुनिया के जो बड़े सिटीज़ हैं उन तमाम की लैंडस्केप्स एंड बिल्डिंग्स के 3D मॉडल्स पड़े हुए हैं। From where they are getting these informations? They hired the people from around the world, like for example out of anyone who is sitting in Karachi, or let's suppose who is sitting in Islamabad. He knows exactly ke blue area, what does mean blue area, right? If someone is sitting in Lahore, he exactly knows what does this mean liberty market. लिबर्टी मार्केट का शायद उसे शॉप के नाम नहीं पता, लेकिन उसे कैटेगराइजेशन बहुत सब पता है कि लेफ्ट साइड पे क्या है, सेंटर में कौन सी शॉप्स हैं, राइट साइड पे कौन सी शॉप्स हैं, और इस तमाम जो ऑलमोस्ट हाफ सर्कल है इसके सेंटर में क्या चीज़ है, राइट? सो यू नो एग्जैक्टली, सो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। और ये सारे के सारे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो बैठ के इसके लिए इस पे काम करते हैं। सो लेट्स, द नेक्स्ट कैटेगरी इज द कैरेक्टर मॉडलिंग। कैरेक्टर मॉडलिंग, एज आई वाज टेलिंग यू, इन द गेम डिज़ाइन के अंदर भी कैरेक्टर मॉडलिंग होती है और इट्स सेल्फ कैरेक्टर्स भी मॉडल होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हम इलस्ट्रेटर के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे व्हाट विल डू इज़ कि जल्दी जल्दी में हम एक कैरेक्टर आपके सामने बनाएंगे, सो दैट कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन इलस्ट्रेटर, करेक्ट? सो उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑल टुगेदर सारी की सारी वाइप आउट कर दें। दिस वन कैटेगरी इज सच अ ह्यूज कैटेगरी के जिसमें आप प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं इंडस्ट्री की, एज वेल एज दी स्मॉलर एज वेल एज द बिगर। ट्रेड बूथ डिजाइंस, जहाँ जहाँ पे अभी लाइक अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोविड स्टेट हमारे यहाँ ट्रेड्स और इस तरह की सारी इज देयर एनीवन फ्रॉम लाहौर? लाहौर में पीसी होटल के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स और एग्जीबिशंस होती हैं। सेम गोज टू द कराची, कराची में भी देर आर पीसी होटल में, आई हैव बीन देयर फॉर मल्टीपल जो इस तरह के इवेंट्स आते रहते हैं। उसके लिए व्हाट द कंपनीज वांट कि आप ट्रेड्स के बूथ डिजाइन करें, which category has to, which product has to be placed at what place, and there are plenty of things like this, right? Okay, as a t-shirt and merchandising, AK knows what does this mean. AK, can you please confirm in the chat box, do you know what does this mean is? AK, you're there? Oh, AK, AK is there लेकिन he's not speaking. Okay, perfect. Thank you. Chat box में उनका reply आ चुका है. Okay, perfect. This is something which we are going to discuss in our next class. अच्छा जी, उसके बाद presentation design. Presentation design, huge itself, a complete big topic that falls into this category. Infographic designs means आपको information दे दी जाए कि during COVID state Pakistan यहाँ से start हुआ and the peak was this, and now at almost inshallah that is going to be wiped out from not only Pakistan, from the world. So that is called the information which will be given to you, and you have to come up with your design capabilities infographic. This category also falls into this. Then uske baad resume design. Resume designs, nothing is to tell you, being graphic designer आपका resume design होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। and इसकी एक छोटी सी एक small सी training भी मैं आपसे share कर दूंगा, which is from the previous class, and you can go through with this. Car apps, and उसके बाद vector tracing, and then उसके बाद Twitch stores and audio video editing. Audio video editing, altogether a huge topic, a complete bombastic किस्म की फील्ड है। एंड इफ मैं अभी शेयर नहीं कर सकता आपके साथ एक वीडियो विच आई एम नाउअडेज with the help of 3 different audio video editing के सॉफ्टवेयर के साथ combining all together 3 से मैं combine करते हुए आई एम coming up with the video editing,
एंड इसकी एक जस्ट मैंने क्लिप, देयर वर थ्री गर्ल्स इन, अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं एंड यू विल फाइंड आउट देयर इज अ वीडियो हाउ टू स्टार्ट एज अ कप केक। वो बच्चों ने ही खुद से इसकी वीडियो बनाई एंड आई जस्ट आस्क देम टू यूज दिस सॉफ्टवेयर एंड दे डेवलप द रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग करने के बाद दे edit that whole video into this, and edit करने के बाद exported, and exported करने के बाद I offered them कि okay come to me, what I'll do is कि मैं उसको upload करूँगा and उसके बाद I'll give you the complete explanation that how we develop this kind of videos। लेकिन इंशाल्लाह वो जब ऑडियो वीडियो एडिटिंग का टाइम आएगा उस टाइम पे हम ये करेंगे, राइट जी। सो दैट्स दी वन पेजर पे जितना कुछ आ सकता था ना, मैंने वो सारी की सारी ग्राफिक एंड डिज़ाइन कैटेगरीज को प्लेस कर दिया। द आइडिया इज जस्ट टू गिव यू first and foremost motivation, at the same time in parallel to all this a basic knowledge कि now you are a graphic designer, inshallah within very small period of time once you reach to the international, either national or the international market, बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए ना सारी, राइट। वैसे बाय द वे मैं किसी भी एक कैटेगरी को उठाऊं, चलें टैटूज़ की बात मैं कर देता हूँ। टैटूज़ डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ऑल टुगेदर अ ह्यूज फील्ड ऑल टुगेदर। कंपैरेटिवली आप गाड़ियों के ऊपर देखें, इन इन आवर मुस्लिम कल्चर वी don't place tattoos on our bodies actually. In the Europe and the America they do, but there are plenty of other options, like we develop tattoos for any companies, but वो develop करने के बाद what we do is कि हम अपनी गाड़ियों पे भी प्लेस कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अदर देन दी जो आप लाइक आर्म्स के ऊपर, या इस तरह ये जो फैशन डिज़ाइनर्स या प्लेयर्स या बड़े प्लेयर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं। And by the way, Had Khan is actually asked what exactly is the difference between tattoos and the logos. देखिए logos वो होते हैं जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। Tattoos is something which is a fashion category. वो आपकी कंपनी को प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, करेक्ट। सो दैट इज द डिफरेंस। हाथ खान आई एम श्योर के दिस वुड बी क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, these are the softwares which basically the whole world uses as a standard software for the for this one category of the graphic design, right? So Photoshop, Adobe Illustrator, and InDesign, these three are the softwares which are actually from the Adobe key products hai. And the fourth is the Coral B, it's a huge altogether complete field जिसको we would love कि उसको टच कर सकें, लेकिन somehow we might not be able to do it। लेकिन anyway, this is the category जो कि Photoshop and Illustrator, that is something are this lecture, and next month inshallah we will try कि InDesign और Coral को टच कर सकें other than Photoshop and Illustrator, because मैं ये Photoshop and Illustrator करा करा के आई एम नाउ finished। So ये था आज का टॉपिक, बिकॉज नाउ वी आर फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड वी आर मूविंग टूवर्ड्स फोटोशॉप, एंड दैट इज़ वाई आई जस्ट थॉट कि उससे पहले पहले ये सारी की सारी कैटेगरीज आपको डिफाइन कर दी जाएँ, आपको बता दी जाएँ, सो दैट कि अगर आप में से कोई बंदा भी इनमें से कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज़ करना चाहता है, यू कैन जस्ट note it down and go through it, and further iski trainings या further iski inshallah that is something which I'll be explaining in the coming videos, and that's it of today's lecture। So